Am I audible to all of you? Am I audible? Yes, Amna, you are. Okay. Well, Assalamu alaikum everyone. Welcome to the second episode of Google Baithak in collaboration with Women in Tech GDSC UET Texila. Well, Google Baithak हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी फील्ड के एक्सपीरियंस लोगों को बुलाते हैं और उनका एक्सपीरियंस और उनकी हर्डल एंड ऑब्स्टिकल्स इन देयर जर्नी शेयर करवाते हैं सो दैट दे कैन गाइड यू एंड encourage you to pursue your dreams. Women in tech have been encouraging women to pursue their dreams in technical fields. So today आज हमारे पैनल पे काफ़ी इंटरेस्टिंग काफ़ी सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट लोग हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट ईमान अमजद जो कि फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं एट फातिमा जिन्ना वुमेन यूनिवर्सिटी एंड शी इज़ एन माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर बीटा रैंक्ड member. Then she's also GDSC lead at her university and recently जो ईमान है इन्होंने एक इवेंट कंडक्ट करा एक जो ईयर है 2022 के उसके एंड पे एक हैकाथॉन में इनकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें इनकी टीम टॉप 10 रैंक्स में आई थी. Then we got Hafsa Syed. Hafsa Syed is basically pursuing her master's degree from Pak Asya Fahushule Institute of Applied Science and Technology. And recently she was an organizing member at Future Fest, which was a huge event and it went quite successful, mashallah. And then we have Hazika Farooq, which is currently enrolled in Habib University. She's also a GDSC lead at her university, and recently she was an organizing member. उन्होंने जो प्लेटो फॉरवर्ड एक्सटेंडेड इवेंट था उसको ऑर्गेनाइज कराया था एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस माशाल्लाह. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ यू गाइस आर डूइंग? Walaikum salam. I'm doing good. How are you? अल्हम्दुलिल्लाह. जो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा आप लोगों वालेकुम से सलाम. सबसे पहले मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है कि आप लोग GDSC लीड्स हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी पे. सो आई वांट टू आस्क दिस कि आप लोग GDSC से कैसे इंट्रोड्यूस हुए थे? हाउ यू गाइस परस्यू योर जर्नी टू बिकम अ लीड एट GDSC? Okay, so I'll start first. So it happened back in 2021 when my former lead Amal Kazi started this chapter, and तब I was the co-lead. तो उसके साथ I learned a lot और फिर उससे से हमने events organize करना start किए. We started going to the events and I started meeting a lot of people. उसके बाद ये था कि I was very active in all the other communities. I have also worked with various NGOs and event भी ऑर्गेनाइज किया था दैट वाज ऑन मेंटल हेल्थ एंड उसमें हमारे पास MNAs MPs थे मीडिया वाले आए हुए थे सब आए हुए थे सो दैट वाज अ वेरी ह्यूज इवेंट. उसके अलावा अभी जो था BSNY हीरोज में यू मस्ट हैव सीन वकास हैदर ही वाज फ्रॉम चिराग लम्स तो उनके साथ भी मैंने काफ़ी काम किया हुआ था. सो ऑल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस वर रियली हेल्पफुल फॉर मी व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ GDSC co-lead. बिसाइड्स अमल वाज रियली हेल्पफुल जो मेरी फॉर्मल लीड थी उनके साथ मतलब मैंने सीखा जितना था और हमने जितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए थे उसने मतलब मुझे इस काबिल बनाया था कि आई अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ लीड एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सिलेक्टेड. तो दिस ईयर आई एम द लीड एंड लास्ट ईयर शी वाज द लीड. तो लास्ट ईयर जब मैंने अप्लाई किया था तो आई वाज को लीड लेकिन उसका काम भी सिमिलर ही होता है जितना लीड का होता है. बट आई बिलीव कि जब मैं एक्चुअल लीड बनी हूँ तो मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन कम्युनिटी में हो गया है बिकॉज पहले आपको इतनी नो हाउ नहीं होती इतना लोग आपको जानते नहीं है आपकी नेटवर्किंग इतनी नहीं होती. बट आई बिलीव मेरी नेटवर्किंग अब बहुत ज़्यादा हुई है एंड दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ लीड. वेल थैंक यू सो मच ईमान. हफ्सा प्लीज़ आप अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगी? जी आमना, थैंक यू सो मच. एक्चुअली मुझे ये गूगल कम्युनिटीज़ या MLSAs का बिल्कुल भी नहीं पता था. आई जस्ट फाउंड वन डे ऑन लिंक्डइन क्योंकि मेरा बैचलर्स में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था रिगार्डिंग सोसाइटीज़ लीड करना या बीइंग अ प्रेसिडेंट एंड एवरीथिंग. सो जब मैं मास्टर्स में गई तो देयर वाज नथिंग लाइक दैट क्योंकि आई स्पेंट 4 years बीइंग वेरी एक्टिव. सो मास्टर्स में जाके आई वाज रियली लाइक कि इट्स रियली बोरिंग और कुछ करने को नहीं है. तो
Then I found out on LinkedIn one day that some GDSC lead applications are open. So I just applied, and जब मैं वहाँ पे गई उसकी वेबसाइट पे थोड़ी बहुत चीज़ें सर्च की, एंड देन आई गॉट टू नो कि अच्छा दिस इज़ अ चैप्टर जो कि आपको अपनी यूनिवर्सिटी में लीड करना होता है. So that's how I got into GDSC, and then I applied, then I became a lead. Experience काफ़ी ज़्यादा था in this field, or just I then just applied and got into it. Well, that's great. ईमान, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है. जिस तरह हम लोग को एजुकेशंस में होते हैं, लाइक मैथ्स में, पास में, या यूईटी में हम लोग को एजुकेशन में होते हैं, तो हम लोग एक स्टेरियोटाइप फेस करते हैं कि, और बहुत से एक पर्सपेक्टिव होता है लड़कियों का खुद भी, कि हम तो लड़कियां हैं, लाइक प्रोग्रामिंग वाली साइड पे या कंप्यूटर्स वाली साइड पे, दे डोंट वांट टू परस्यू इट जस्ट बिकॉज कि हम तो लड़कियां हैं एंड ऑल दैट. वो जो एक स्टेरियोटाइप होता है वहाँ पे कि हम तो नहीं कर सकती, हम तो लड़कियां हैं. आई जस्ट वांट नो कि आप ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी में होती हैं, तो क्या आपको वहाँ पे भी वो स्टेरियोटाइप्स या वो जो एक डिस्करेजमेंट होती है कि हम लड़कियां हैं, हम टेक्निकल फील्ड में क्या करेंगे एंड ऑल, क्या आप वहाँ पे भी वो चीज़ फेस करते हैं, या पे वहाँ पे कंपटीशन काफ़ी हाई होता है? अच्छा, सो एज फार एज इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आर कंसर्न, तो जो विलिंगली उस डिपार्टमेंट में आते हैं उनका तो इजी सीन होता है. लाइक दे चोज दैट फील्ड एंड दे आर वर्किंग ऑन इट. उनको प्रोग्रामिंग भी आ रही होती है, वो कंपटिशन्स में भी पार्ट ले रहे होते हैं. बट मैंने जहाँ तक देखा है कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें लड़कियाँ बिल्कुल भी नहीं आगे. बहुत कम ऐसे बच्चे हैं हमारी यूनिवर्सिटी में जो मतलब इतना आगे आते हैं, जो अपने आप को जो अपनी नेटवर्किंग करते हैं, जो सोशल इवेंट्स में जाते हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं बिसाइड्स स्टडीज़. जैसे आप अभी टेक्निकल बात करिए ना, जिस टेक्निकल एजुकेशन की बात करिए, जैसे प्रोग्रामिंग वगैरह की, तो जो नॉन टेक्निकल बच्चे हैं ऑब्वियसली वो तो नहीं आते साइड, बट जिनने इसी फील्ड में एडमिशन लिया होता है वो बहुत अच्छे से इसको परसू कर रहे होते हैं. As far as if I talk about an all girls university. लेकिन जहाँ तक मैंने अपनी अभी तक जर्नी में देखा है कि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों को पुश करना पड़ता है ताकि वो आगे आएँ, वो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करें. इवन जब हमने जीडीएससी को स्टार्ट किया था, उनको ये बताने में ही आधा टाइम गुजर गया था कि व्हाट इज़ जीडीएससी, लाइक हाउ मच बेनिफिशियल इट इज़ फॉर देम. इसके अलावा जब हम हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि यार ये फ़ायदे हैं, आप आओ. इसके अलावा जो हमारे इवेंट्स होते हैं हम वहाँ पे जाते हैं, तो होता है कि उनको उस एक ज़ोन से बाहर आने में ना काफ़ी एफर्ट्स लगती हैं. सेकेंडली एक और ये मसला होता है कि गर्ल्स का ये भी होता है कि दे डोंट लाइक टू इंटरेक्ट विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल, स्पेशली जब सोसाइटी में ज़्यादा एक हम मेल डोमिनेट सोसाइटी में रहते हैं, तो उनको ये भी होता है कि नहीं यार, हर जगह लड़के होते हैं, लड़के हैं तो हम नहीं जाएंगे. ये चीज़ ज़रूर है. बट यही हमने अभी इसी चीज़ पे काम किया कि ये जो बैरियर है इसको हम तोड़ के बच्चे आगे आएँ. स्पेशली ये है कि उनके जो ये स्टीरियोटाइप है इसको ख़त्म करें, बिकॉज many people are taking inspiration from me, from Amal, and a lot of other girls as well who are working really hard. So यही हमारा बेसिक गोल था, and I am sure कि by the end of this tenure I'll be able to impact a lot of students. Well, inshallah, inshallah. Hafsa, मेरा आपसे क्वेश्चन है that you have been recently passed of Future Fest. So you're part of Future Fest. So आपने अपनी जो as an organization member and as an organizing member, how you dealt with all those obstacles that you feel while organizing them as a woman? Hafsa, you there? I think Hafsa is facing some technical issues. So ईमान, मैं आपके साथ ही कंटिन्यू करती हूँ. जब हम लोग यूनिवर्सिटी में आते हैं तो एक इन्वायरमेंट का ना बहुत बड़ा चेंज आता है. लाइक एट कॉलेज लेवल आप लोग सारे इक्वल होते हो, सारे सेम, मतलब एकेडमिक में आपके मार्क्स वगैरह के हवाले से थोड़ा सा फर्क होता है, बट सारे एक जैसे ही होते हो ऑलमोस्ट लेवल पे.
व्हेन यू कम टू यूनिवर्सिटी तो आप फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में ही देखते हो कि कुछ लोग एआई और मशीन लर्निंग की तरफ जा रहे हैं, कुछ के इस हिसाब से स्किल्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ की प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ अब इवन फाइवर और अपवर्क पे कमा भी रहे होते हैं अच्छा खासा, and that causes a lot of anxiety and social pressure on you. So how you dealt with that pressure in that phase of your life? अच्छा, सो दैट्स अ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज मेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक, आप कह सकते हो, स्टोरी है, जर्नी है. इनिशियली आई नेवर वांटेड टू कम टू दिस यूनिवर्सिटी एंड आई नेवर वांटेड टू परसू दिस डिग्री एज वेल. मेरा कोई प्लान नहीं था. आई वाज एन एनओपी स्टूडेंट, लाइक आई वाज सेलेक्टेड for the national outreach program by LUMS, and I went there. And बट अनफॉर्चुनेटली आगे मैं नहीं परसू कर पाई थी मेरा बैचलर्स वहाँ पे. बट दैट वाज वेरी वेरी हार्ड ब्रेकिंग फॉर मी, बिकॉज मैंने वहाँ का जो था एनवायरनमेंट, या आप कैंपस लाइफ कह लो, मेरे माइंड में वही थी. बिकॉज मैंने वहाँ पे एक अपनी लाइफ का पार्ट गुजारा था. आई लिव देयर फॉर 2 वीक्स. मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया था. मेरी जितनी भी आप कह सकते हो ना ग्रूमिंग हुई थी वहीं पे हुई थी. बट देन सडनली जब मुझे आना पड़ गया था फातवा जना में, सो मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस चीज़ को एक्सेप्ट करना. सेकेंडली मैंने वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को मैंने चूज़ कर लिया था. आई डोंट नो कि मैंने कैसे किया था. एंड बहुत ज़्यादा वो मेरे लिए एक डिप्रेशन वाला फेज था, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं इसको कैसे मतलब ओवरकम करूँगी. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, इवन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में डी आया था. आई वाज लाइक, ये क्या है, आई कैन नॉट डू दिस. तो इतना मतलब इस हद तक मेरा डिप्रेशन था. एंड आई हैड द वर्स्ट जीपीए एंड द वर्स्ट ग्रेड्स ऑफ माई इंटायर लाइफ. मेरे फर्स्ट सेमेस्टर की बात है. तो उस टाइम तक मुझे ये था कि मतलब कुछ टाइम पहले, लाइक कॉलेज में, आई वॉज द हाई अचीवर, आई वॉज द टॉपर. मेरे कॉलेज के बाहर बड़े बिल बोर्ड पे मेरी पिक्चर थी, लाइक शी इज़ द हाई अचीवर. एंड कुछ मंथ्स के बाद आई वॉज हैविंग अ डी ऑन माई मार्कशीट. तो मैं सोच रही थी कि यार ये क्या हो गया मेरी लाइफ के साथ. बट उस टाइम ये था कि माई फादर वॉज रियली हेल्पफुल एंड ही वॉज रियली सपोर्टिव. उन्होंने मुझे बताया कि व्हेन यू बाय अ न्यू कार, यू टेक टाइम टू लर्न इट. ठीक है, आपकी इनिशियली आपके एक्सीडेंट्स होते हैं, बट जब विद टाइम जब आप सीख जाते हो तो आप बहुत स्मूथली ड्राइव करते हो. फिर मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मैंने सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. मोर ओवर आई वॉज अ हॉस्टलाइट, तो मेरे लिए उस इन्वायरमेंट में एडजस्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया था. बट इसके साथ साथ ये हो गया था कि उस टाइम मैंने थोड़ा सा ये किया कि कोविड आ गया था, तो आई वेंट बैक टू माई होम. तो इट हेल्प मी अलॉट टू रिकवर फ्रॉम डिप्रेशन. बट आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ एज वेल. साथ मैंने अपनी जो सोशल एन जी ओज या सोशल वर्क था उसको छोड़ा नहीं था. आई वॉज वर्किंग विद 3 NGOs फ्रॉम लम्स, and one from it was a student run organization. It is named as Firefly NGO, but ये कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड थी, बिकॉज माई फाउंडर स्टडीज ओवर देयर. उसके साथ साथ फिर जब हम आए आगे तो GDSC भी आ गया, MLSA का भी पता चल गया. एंड आई एम ऑल्सो एन MLSA. तो फिर इसके साथ ये था कि थोड़ा सा एक्सपोजर हो गया. विद द पैसेज ऑफ टाइम, इवन जब मेरी GDSC की सिलेक्शन ईमेल आई थी, तो आई वॉज रियली हैप्पी. एंड आई वॉज लाइक कि अल्लाह ताला ने मुझे वहाँ पे जो मैंने डिप्रेशन फेस किया था उसका सिला ज़रा मुझे यहाँ पे मिला था. बिकॉज आई हैव सीन माई सेल्फ ग्रोइंग फ्रॉम इट. जो भी सारा वो डिप्रेशन वाला फेज था, आई लर्न दैट हाउ वी कैन, हाउ टू विन द गेम नो मैटर व्हाट कार्ड्स आर. आई वुड से दैट, बिकॉज मेरी लाइफ में जो फेज आया था, आई लर्न फ्रॉम इट, आई ग्रीव फ्रॉम इट. और एंड नाउ आई एम अ टोटली डिफरेंट पर्सन. अगर कोई मुझे कहेगा कि इवन आई वेंट टू नास्ट एज अ स्पीकर एंड आई कंडक्टेड देयर अ पाइथन वर्कशॉप, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई वुड डू दैट. बट अब जाके वो एक लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आया. वो एक जो मैंने हिट किया था बिल्कुल बॉटम को, उससे मैंने अब फिर वापस बाहर आई हूँ. एंड आई हैव लर्न अ लॉट, आई हैव मेट अ लॉट ऑफ न्यू पीपल. एंड जितने लोगों से मैं मिली हूँ मैंने उनसे कुछ ना कुछ सीखा ही है. सो आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट पार्ट ऑफ माई लाइफ कि मुझे उस टाइम नहीं मिला, बिकॉज आज मुझे बहुत कुछ मिल गया है. एंड GDSC इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड इट हैज़ प्लेड अ ह्यूज रोल इन माई लाइफ एंड इट हैज़ इम्पैक्टेड मी अ लॉट इन अ पॉजिटिव वे. सो ये था सारा सीन. I Well, hope I answered बहुत your question as well. I actually I just missed it because I was just telling about my story. यही क्वेश्चन था नहीं, आपका? to be very honest, you did great. मतलब वो जो एक जर्नी थी, your journey is amazing, your struggles are amazing. Hafsa, am I audible to you? आपका वो थोड़ा सा टेक्निकल वाला इशू हो गया था, आई थिंक. जी आमना. ओके.
सो मेरा आपसे ये जी, क्वेश्चन कैन था यू कि हियर मी नाउ? रिसेंटली आपने, या आई कैन, हेलो। नाउ यू आर ऑडिबल। तो कोई इशू नहीं, होता रहता है। जो मेरा आपसे क्वेश्चन था वो ये था कि रिसेंटली यू वर एन ऑर्गेनाइजिंग मेंबर इन फ्यूचर फेस्ट। सो आई वांट टू नो इज कि एज अ वेमेन आप जब ऑर्गेनाइजिंग टीम में थी, तो व्हाट हर्डल्स यू फेस्ड एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैम? Hmm. Uh, as a part of Future Fest, when I joined, so it was online. मतलब I was working from home and everything. But जब हमारा जो event था वो उसकी timeline करीब आ गई, then we all have to, the whole team had to move to Lahore and we worked from office. So that was the first time मैं अपने शहर से बाहर गई थी, and I lived there for a month almost. तो स्टार्टिंग में इट वाज अ बिट स्कैरी। आई वाज मतलब थोड़ा सा मुझे था कि हाउ विल आई लिव, पता नहीं क्या होगा एंड स्टफ। बट थ्रू थ्रू आउट द होल जर्नी मुझे बिल्कुल भी एक दिन भी ऐसा फील नहीं हुआ कि आई एम आउट ऑफ होम या मैं काम करने आ रही हूँ या कुछ एग्जॉस्टिंग हो रहा है। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था बिकॉज एवरी वन मेड अस फील वेलकम्ड। थोड़े से जो इश्यूज फेस मे बी मुझे थे, वो ये हो सकता है कि व्हेन यू आर समवेयर जहाँ पे आप लोगों को जानते नहीं हो, तो यू आर के आप सोचते हो कि हम रहेंगे कहाँ, क्या करेंगे, हमारी बात कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। बट इट वाज नथिंग लाइक दैट। वट एवर इज हैपनिंग, वी फेल्ट लाइक वी आर अंडरस्टूड, हमारी बात सुनी जा रही है। तो फ्यूचर फेस्ट में आई डोंट थिंक सो कि मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस हुआ। बट येस, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर माय पेरेंट्स कि वो मुझे एक महीने के लिए अकेला वहाँ पे भेजें। So initially it was like 3 days we had to go there. During the first 3 days हमने सारा कुछ एक्सप्लोर किया कि अच्छा where we will live, हम किस टाइम आएंगे किस टाइम जाएंगे, what would be the timeline. तो as such डर था कि मैं जाऊंगी तो क्या होगा। बट व्हेन आई वेंट देयर और जब हमने सारा काम स्टार्ट किया तो इट नेवर फेल्ट लाइक, नॉट इवन अ सिंगल डे ऐसा नहीं गुजरा कि जब हमने वहाँ पे कुछ सीखा ना हो। वी हैड फन अ लॉट और इट वाज लाइक द बेस्ट एक्सपीरियंस आई कुड से ऑफ माय लाइफ। तो यस, यू फील स्केर्ड, बट जब आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो ना, देन यू गेट टू एक्सप्लोर अ लिटिल। तो अगर मैं जब जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तो जो डर मुझे था मैं उसी तरीके से रहती, मैं किसी से बातचीत ना करती, तो मे बी आई कुडंट एंजॉय माई टाइम देयर बिकॉज वट आई वॉज डूइंग, आई लव डूइंग दैट, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स या डूइंग फ्यूचर फेस्ट इज लाइक समथिंग दैट क्रिएटेड अ बिग इम्पैक्ट। तो एट फर्स्ट आई वॉज स्केर्ड, बट बाद में when I felt like यार this is something I like doing, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग अफ्रेड कि पता नहीं क्या होगा, सफ़र कैसा गुजरेगा, कोई मुझसे सही से बात करेगा कि नहीं करेगा, मैं अकेली हो तो नहीं होंगी, सब लाइक दैट, आई स्टार्टेड इन्जॉइंग दैट। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होता था, आई विल टेल माई लीड या whoever is approachable। तो कुछ भी प्रॉब्लम है, आई वुड टेल देम, बी ऑनेस्ट, एंड इट वाज फाइन लाइक दैट। थैंक यू सो मच हफ्सा। मेरा आप दोनों से एक क्वेश्चन है कि ईमान आप भी अपने फाइनल ईयर में हैं और हफ्सा आप मास्टर्स की डिग्री परस्यू कर रही हैं। अगर मैं आपको बैचलर्स वाला जो टाइम है फ्रॉम योर वेरी फर्स्ट सेमेस्टर, आपको अगर आप लोगों को ऐसा चांस प्रोवाइड किया जाए या लेट्स से कोई भी ऐसा इवेंट होता है एंड यू आर गिवन द अपॉर्चुनिटी कि आप अपने बैचलर्स से लेके अभी तक वाला टाइम दोबारा से स्टार्ट करें, तो आप लोग क्या करेंगे? लाइक विच चेंजेस यू थिंक अगर मैं इस पॉइंट पे ये काम कर लेती तो अब आई वुड बी इन अ बेटर पोजीशन, या फिर शायद मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था सो दैट मैं अपने पाथ से स्टिक किए रहती या इस तरह से, तो व्हाट चेंजेस यू थिंक यू वुड मेक? So should I go or Iman first? Haza, if you wanna go first, it's totally fine. You can. Yeah, for me it would be different than Iman क्योंकि I miss those days a lot। और अगर मैं कुछ चेंज करना चाहूँ भी तो I think I would change my degree जो मैंने की है। I would love to do what I wanted to do अगर उस टाइम पे मैंने वो डिसीजन राइट लिया होता। बट नो रिग्रेट्स, आई लर्नड अ लॉट, आई एंडेड अप changing my field from bioinformatics to AI।
तो आई डोंट थिंक सो देयर वुड बी समथिंग आई वुड लाइक टू चेंज, अदर देन अगर मैं उस वक्त ये डिसीजन मे बी कर लेती ना कि आई वांटेड टू परस्यू आर्ट्स और मे बी एमबीए और समथिंग लाइक दैट, तो आई वुडंट बी व्हाट आई एम टुडे. मैं अभी मास्टर्स या एमए ना करी होती, आई वुडंट बी लीडिंग टू स्टार्टअप्स, मैं दो स्टार्टअप्स फाउंड ना करती. तो आई थिंक इट ऑल मेक सेंस. अल्लाह ऑलवेज हैव अ वे. अल्लाह ताला ने प्लान्स हमारे लिए बनाए होते हैं. तो जस्ट आई थिंक आई हैव लर्न दैट कि आप अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा है, यू जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट अल्लाह एंड जस्ट लेट हैपन. Whatever is happening, just accept that and give your fullest. That's all. Over to Iman. अच्छा, सो जैसे हफ्सा ने भी मेंशन किया ना एक्सेप्टेंस, तो मैंने जो सबसे ज़्यादा चीज़ सीखी है वो है द आर्ट ऑफ एक्सेप्टेंस. मैं एक्सेप्ट नहीं करती थी चीज़ों को. जैसे आई डिडंट गो टू लम्स एंड मैंने अपना उसको प्रॉपर एक पर्सनैलिटी बना ली थी कि यार आई एम अ फेलियर और समथिंग. तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा उस चीज़ से बाहर आने में. तो आई वुड डेफिनेटली गो बैक एंड एन्जॉय दैट टाइम, क्योंकि मुझे चीज़ों को एक्सेप्ट करना अब जाके आया है. अब लाइक इफ़ आई गेट अ रिजेक्शन आई एम लाइक ओके फाइन, होता रहता है. सो आई गेट न्यू अपॉर्चुनिटीज एज वेल. तो इसके अलावा जो मैंने सबसे ज़्यादा चीज़ सीखी है, स्टॉप बीइंग अ पीपल प्लीजर. दूसरों को खुश मत करें, कोई कभी खुश नहीं होता. डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी. मैंने ये चीज़ की है एंड आई स्टिल डू इट समटाइम्स. मैंने खुद देखा, मैं कहा यार बस एक पॉइंट आता है, यू बैक ऑफ एंड यू आर लाइक कि नहीं, अब लोगों को हमने प्लीज़ नहीं करना. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर working as a GDSC lead, stop doing something or stop arranging events or going to hackathons or whatever you are doing to please others or to say that लोग मेरी वाह वाह करेंगे कि यार इसने इतना ज़्यादा काम किया. डू इट जस्ट बिकॉज यू लाइक इट. जब आप किसी चीज़ को इसलिए करते हो क्योंकि वो आपको पसंद है या आप उसका एक इम्पैक्ट छोड़ना चाहते हो, तो उसमें एक डिफरेंट फ्लेवर आ जाता है. वो पता चलता है कि यार इस बंदे ने मेहनत से किया, दिल से किया है. लेकिन जब ये सोचते हो कि फ़लाँ बंदा क्या कहेगा, फ़लाँ बंदा क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो वहाँ से ना बहुत मसले शुरू हो जाते हैं. क्योंकि फिर आप एक पीपल प्लीजर बन जाते हो एंड दैट इम्पैक्ट्स यू अलॉट. पर्सनली आपकी जो बहुत ज़्यादा जो आपकी जर्नी है वो अफेक्ट हो जाती है. एंड सेकेंडली, जिस हफ्सा ने कहा है कि अल्लाह ताला सबके लिए प्लान्स होते हैं, तो दिस इज़ वेरी ट्रू. हर किसी की जर्नी डिफरेंट होती है. किसी को कोई चीज़ पहले मिलती है, किसी को कोई चीज़ बाद में मिलती है. वो कहते हैं ना नसीब से ज़्यादा ना वक्त से पहले वाली बात. सो दैट इज़ टोटली एप्लीकेबल. बहुत ज़्यादा सिनेरियोज में मेरे पे एप्लीकेबल है. आई एम श्योर जो भी लोग अभी देख रहे हैं वो इस चीज़ से ज़रूर रिलेट कर सकते हैं कि अगर उनको लाइफ में एक पॉइंट वो चीज़ नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलता है हमें. बिकॉज आई रिमेंबर जिस दिन मुझे GDSC लीड की वो आई थी ना ईमेल के कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर सिलेक्टेड, तो वो मेरा एक बहुत ही होलसम मोमेंट था. मतलब इनिशियली क्योंकि सबको ईमेल्स आ गई थी, मुझे नहीं आई थी और मैं सोच रही थी पता नहीं आएगी भी या नहीं आएगी. और आई रिमेंबर मैंने नमाज़ पढ़ी थी और मैं जैसे फ़ोन उठाया तो मुझे ईमेल आई हुई थी. एंड दैट वाज द मोमेंट आई स्टार्टेड क्राइंग. आई वाज विद देयर विद माय फ्रेंड्स. आई वाज इन द हॉस्टल एंड माय फॉर्मर लीड वाज इन US बैक देन. तो वहाँ से मुझे कॉल किया एंड आई वाज लिटरली क्राइंग उस टाइम कि अल्लाह ताला ने मुझे वो चीज़ जो मैंने दुआएं इतने साल पहले मांगी थी, लाइक 2018 2019 के टाइम्स में लम्स जाने के लिए, वो मुझे नहीं मेरी कबूल हुई थी, लेकिन वो मेरी यहाँ पे आके कबूल हुई थी. और ये बहुत अच्छा रिवॉर्ड था बिकॉज आई नो कि मैंने उस चीज़ से सीखा है एंड बहुत ज़्यादा ग्रो किया है. इफ़ आई सी माई जर्नी, तो आई वुड अप्रिशिएट कि थिंग्स डिडंट वर्क आउट बैक देन, बिकॉज जो अब हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है. सो अप्रिशिएट द प्रोसेस एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. Well, that was great. मेरा आप दोनों से अब ये क्वेश्चन है कि हम लोग जो आप लोग दोनों अपनी फील्ड में एक्सपीरियंस्ड हैं और माशाल्लाह यू गाइस आर डूइंग ग्रेट. सो आई वांट टू नो इज कि आप लोगों को क्या फील होता है कि आप लोगों ने जो अपनी जो जर्नी की है, इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि जो फर्दर फीमेल्स इन चीज़ों को परस्यू करना चाह रही हैं कि हाँ भाई अगर इस पॉइंट पे ये चीज़ थोड़ी सी चेंज कर दी जाए या इस सिस्टम को या इस सोच को या स्टेरियोटाइप को ख़त्म कर दिया जाए, तो इट वुड बी इजियर फॉर देम टू परस्यू दीज थिंग्स और दीज करियर्स और देयर ड्रीम्स. अच्छा, आई वुड से कि मेरी सबसे ज़्यादा चीज़ फेस की है वो ये थी कि सिंस आई एम स्टडिंग इन ऑल गर्ल्स यूनिवर्सिटी, तो बच्चों का इतना एक्सपोजर नहीं था.
तो जब वो मेरे पास आते थे इनिशियली, जब मैंने इंटरव्यूज़ लिए, तो मुझे पता चल गया था यार इनने कभी इस तरह काम नहीं किया हुआ प्रोफेशनली, और इनका ये फर्स्ट टाइम होगा। तो आई स्टार्टेड गिविंग देम अ चांस। जब आप किसी को व्हेन यू गिव देम दैट चांस एंड दे टेक इट, तो वो वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो ये है कि ट्रस्ट अदर पीपल, बिलीव इन देम। अगर बिल्कुल कोई नूब है, तो अगर आपको लगता है कि उसमें पोटेंशियल है, तो ज़रूर उस पर टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट। I think हफ्सा के एंड पे इशू आ रहा है वाईफाई का. Is it हफ्सा or is it on my side? Sorry, हफ्सा नहीं, ईमान. ईमान. ओके, सॉरी, इट वाज माय इंटरनेट। सो आई वाज सेइंग कि जब वो बच्चा या बच्ची, जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हो, वो ग्रो करते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बिकॉज यू आर लाइक ये आई इम्पैक्टेड दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज नाउ वर्किंग एंड इम्पैक्टिंग लॉट ऑफ अदर स्टूडेंट्स एज वेल। सो आई वुड रिकमेंड और सजेस्ट अदर पीपल जो अभी इस वक्त देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि दे वांट टू बिकम अ जीडीएससी लीड, या किसी भी लीड पोजीशन पे जाना चाहते हैं, I would just recommend you all to start believing in your team and start giving them chances. Nobody is perfect. अगर आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे ही नहीं, वो एक्सप्लोर अपने आप को करेंगे ही नहीं, तो फिर वो आगे कैसे आएंगे? एंड सेकेंडली, ट्रस्ट इन गर्ल्स मोर। अगर कोई यहाँ पर लड़के देख रहे हैं, क्योंकि उनके ज़्यादा कुछ इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन नॉट ट्रैवल अलोन, दे कैन नॉट ट्रैवल रात को, उनके बाहर रहने के इश्यूज होते हैं, उनकी टाइमिंग्स फ्लेक्सिबल नहीं होती, आपको देखना पड़ता है। तो मेक श्योर कि उनको आप इतना सेफ और सिक्योर फील कराओ अपने साथ, कि वो कहीं भी जाएं तो उनको ये इशू ना हो कि यार कि हम वापस कैसे जाएंगी। अगर इफ़ बॉयज़ आर वॉचिंग मी राइट नाउ, तो उनको अपनी बहनों की तरह ट्रीट करो। उनको मतलब इतना करो कि अगर रात हो रही है, वो अकेले नहीं जा सकते, इतना उनका आप पे ट्रस्ट हो कि आप उनको खुद जाके छोड़ सको। सो इन दिस वे गर्ल्स विल स्टार्ट कमिंग फॉरवर्ड। वो जाएंगी इवेंट्स पे, वो लोगों से मिलेंगी, वो ट्रैक करेंगी, वो कहेंगी कि इफ़ माई टीम है सच गुड जेंटलमैन, तो बाकी दुनिया में भी होंगे। सो दैट्स हाउ यू स्टार्ट बिलीविंग इन अदर पीपल एंड यू स्टार्ट ट्रस्टिंग पीपल। तो ये है कि give them a chance. That's what I would say. Over to you, Hafsa. एग्जैक्टली ईमान, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूँगी कि गिव द वुमेन लीडिंग पोजीशंस जिनमें पोटेंशियल है. आई वुड जस्ट शेयर सम एक्सपीरियंस ऑफ माइन. ड्यूरिंग माय बैचलर्स आई वाज लीडिंग अ सोसाइटी which was JS Park. तो उसमें ये था कि I was on the top position. तो what I felt was I heard a lot कि मतलब इतनी छोटी सी है, हम पता नहीं इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है. और I heard from men a lot कि मतलब she is not capable of doing it, but yet she is doing it. पता नहीं इसको क्यों आगे लाया हुआ है and stuff like that. But the thing was कि जिस वजह से मैं उसको लीड कर रही थी, एट द एंड दे ऑल अप्रिशिएटेड इट, क्योंकि दैट वाज अ टाइम एक्चुअली दिस हुआ ये था कि उस सोसाइटी के जो सारे मेंबर्स थे ना, दे ऑल ग्रेजुएटेड एट वंस, क्योंकि वो चल रही थी काफ़ी टाइम से ना सोसाइटी. तो 7th सेमेस्टर फर्स्ट मतलब वो पूरा एक चल रहा था. मेंबर्स जो उसके टॉप लीडिंग पोजीशंस पे थे, वो सारे एक दफ़ा ग्रेजुएट हो गए. एंड 2 other members were the ones left. तो उसमें से फिर हम में से सिलेक्ट हुए. तो आई वाज द वन सिलेक्टेड एज ऑन द लीड पोजीशन. तो मेरा कद भी थोड़ा सा छोटा है, तो आई वुड स्टैंड एट द रोस्टम, और वहाँ पे इतने सारे लड़के, और वो मेरे से पता नहीं कितने लंबे लंबे और छोटे छोटे बैठे हैं, आई एम ड्रेसिंग देम एंड टेलिंग देम व्हाट टू डू. तो किसी पॉइंट पे दे फेल्ट निगलेक्टेड, या क्या कह सकते हैं, मतलब उनको ये बात बुरी लगती थी कि व्हाई अ वुमन इज लीडिंग अस, वी कैन डू दिस बेटर देन हर. बट तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी शुड ब्रिंग मोर वुमेन एट द लीडिंग पोजीशंस. अगर कोई ऐसी बात होती भी नहीं है ना, बहुत सारे स्टूडेंट ने जाके ये भी बोला कि मतलब शी इज़ अ वुमेन, डोंट मेक हर डू लाइक, डोंट गिव हर दिस पोजीशन. तो किसी लड़की को देनी चाहिए, आगे भी कोई ऐसा मसला हो सकता है. तो अगर उस टाइम पे द टीचर्स वर सपोर्टिंग मी, उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया, मैं भी ये बातें सुनकर ऑब्वियसली यू फील बैड एंड यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर पोटेंशियल. तो आई वुड सजेस्ट एंड कि जब भी ऐसा कोई पॉइंट आए व्हेन समवन ट्राइज टू मेक यू फील डाउन,
डोंट टेक इट ऑन योर हार्ट, डोंट लेट अदर्स मेक यू फील डाउन, कभी भी नहीं अपने पोटेंशियल को या अपनी लड़कियों को कभी भी नहीं डाउन फील करना चाहिए. फॉर द टाइम बीइंग इट फील्स लाइक दैट, बट जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ कि आप यहाँ तक पहुंचे हो बिकॉज यू कैन. जैसे इस का भी यही नाम है, यस आई कैन. तो आई थिंक ये चीज होनी चाहिए, ब्रिंग मोर वुमेन टू द लीडिंग पोजिशन, नॉट इवन लीडिंग पोजिशन ना भी हो, बट bring more women in communities and stuff like that, ताकि उनको उनका जो डर है ना, आई फील लाइक कि अभी भी लड़कियों में ये डर है कि उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, उनकी आवाज नहीं सुनी जाएगी. तो जितना हम उनको स्पेस देंगे या जितनी उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे, उतना ही ज्यादा वो एक्सप्लोर करेंगी, फ्लरिश करेंगी. तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू. Okay, that's great. Hazika has joined us, everyone. Hazika is basically pursuing her degree from Habib University. She's also a GDSC lead at her university. And recently, उन्होंने एक event organize कराया था as an organizing member, Flutter Forward Extended event. And it was a huge event and it was a great success. Well, welcome, Hania. Assalamu alaikum. Hazika, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम. मेरी आवाज़ आ रही है ना? Am I audible? Sorry. Am I Yeah, audible? you are audible. Yes, your Okay. voice is quite clear. So first of all, I'm so sorry for being this late. Actually, हमारी यूनिवर्सिटी बहुत देर से ऑफ होती है, and I just reached home 8 बजे. Secondly, thank you for having me. It's a great pleasure to be here. And this last question you asked, I would also add to the point that Hafsa and Eman were saying. First of all, कि we should like maintain an environment हमारे आसपास कि girls feel motivated to talk and put their ideas forward. Secondly, bringing more girls to the community will only be possible when girls themselves have this sort of thinking कि yes, we can do it, and yes, in the end of the day, it's you who can save your life, it's you who can bring yourself to the glamour light. So I think girls should have that much confidence in themselves कि yes, हाँ मैं कर सकती हूँ, no matter what anyone else is thinking और कोई भी कुछ भी सोच रहा है. Because हाँ, ये जो हफ्सा की बात है बिल्कुल सही है. Boys sometimes feel neglected when a girl leads them and they feel like कि क्यों ये लड़कियाँ क्यों लीड कर रही हैं, ऐसा कुछ कुछ लोग होते हैं ऐसे. And then at that time you have to like come forward with your work and अपने आप को मनवाने के लिए the only thing you can do is अपने आप पे confident and वो कहते हैं ना, आपका काम बोलना चाहिए कि आप कैसे हो, तो वही चीज़ in the end matters. Well, that's I great, would just Hazika. add one more thing. Yes, कि please. being women leads, we should also empower other women. क्योंकि अगर किसी लड़की कोई बात नहीं सुन रहा, तो हमें वो कॉन्फिडेंस दूसरी बच्चियों को या दूसरी लड़कियों को देना चाहिए कि दे कैन इजीली कम एंड टॉक टू अस. मतलब वो हमारे एटीट्यूड से या हमारे बिहेवियर से या बॉडी लैंग्वेज से उनको ये फील ना हो कि लाइक वी कैन नॉट लिसन टू देम, या हमें थोड़ा सा कुछ अजीब सा फील होगा. लाइक वी शुड empower them. This should also be added in that. I totally agree with your point because I believe what I believe is कि अगर हम सिर्फ विमेन ही एक दूसरे की बैक पे सपोर्ट करें ना, तो हम लोगों को शायद सोसाइटी में जो आजकल के हर्डल्स या ऑब्स्टिकल्स या स्टीरियोटाइप्स फेस करने पड़ रहे हैं, वो शायद काफ़ी हद तक हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम सिर्फ विमेन ही एक दूसरे को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दें. वेल हासिका, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है दैट रिसेंटली आपने फ्यूचर सॉरी जो फ्लिटर फॉरवर्ड एक्सटेंडेड इवेंट था, आपने उसको ऑर्गेनाइज करवाया था. यू आर एन ऑर्गेनाइजिंग मेंबर इन दैट and it was a huge event and it went very well, mashallah, and congratulations for that. मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी that what was your like उसको ऑर्गेनाइज करने में आपको जो हर्डल्स फेस करने पड़े थे या आपको जो अपनी शायद कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा हो, हाउ यू डेल्ट विद दैट, आपने उसको कैसे मैनेज किया? So basically, after coming into GDSC, I found out that events are my thing, and when it comes to like organizing event, I can even leave academics and I become very spectacle and मतलब मैं बिल्कुल वो हो जाती हूँ कि ये भी चीज़ होनी चाहिए, ये भी चीज़ होनी चाहिए, और मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ कि मेरा क्विज है भाई, क्विज का पढ़ लो नहीं. तो फॉर फ्लटर फॉरवर्ड एक्सटेंडेड 2 मंथ पहले ही वलीद अरशद ने मुझे कहा था कि आप प्रपोजल दे दो यूनिवर्सिटी में एंड ये वे कर लो. But the thing with Habib University is they are so much strict about their policies and security things.
So whenever we organize anything at Habib, it's very difficult to like invite the outsiders inside the university premises, and they don't like give full access of the campus to everyone, and उनके बहुत सिक्योरिटी के मसले होते हैं. तो a lot of our time was like spent in taking that thing, or even on the event day vendor बाहर आया हुआ था और बिरयानी वाले आए हुए हैं, and like security वाले कह रहे हैं हम गाड़ी नहीं अंदर आने देंगे. That was like बहुत सारे मसले हुए थे, but and at the end of the day we had a good team, and everyone played their role and everyone did the best. So the event was a huge success because of my team. उन लोगों ने बहुत अच्छा किया, और टेक अवे यही था, की टेक अवे कि I being a person who does everything at the deadline, मतलब वो सब कुछ मेरा एंड में हो रहा होता है, बट फॉर दिस इवेंट वी हैड एवरीथिंग प्री प्लान. तो जो रन टाइम के मसले थे वो भी हो गए, और रन टाइम पे मसले आते ही हैं, मतलब नो मैटर हाउ प्री प्लान द इवेंट is and how like well managed, well organized everything is, रन टाइम पे कुछ ना कुछ हो ही जाता है. तो like that's a thing, and I think रन टाइम के मसले ही होते हैं जो they invite you to grow and like think वो मतलब out of the box होते हैं and very random होते हैं. तो they like open stage के ये भी हो सकता है, then the next event you like take care of that thing at the very first. So these are the takeaways. ओके हाजिया, आप नहीं थी उसमें हमारे साथ जब मैंने ईमान और हफ्सा से उनकी जर्नीज पूछी थी फॉर बीइंग अ जीडीएससी लीड. जब मैंने उनसे पूछा था दैट हाउ दे वर इंट्रोड्यूस्ड टू जीडीएससी एंड हाउ दे बिकेम द लीड, हाउ व्हाट वर द हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड व्हाट they faced. So would you like to share your journey? Yeah, I would brief it thoda sa कि first of all I heard of GDSC through like one of my friends was in GDSC last year. I had never been a part of GDSC and I was never like very interested in it. मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में. But then when my friend introduced me to it, I was like हाँ ये अच्छी चीज़ है, की जा सकती है. And my major was not even CS. I was a electrical major, or I had interest in CS and I had a minor in CS. So I was like, okay, GDSC is a good thing. Let's apply. And then when I finally became the lead of GDSC, one major obstacle which I faced in my university was that no one knew of GDSC, and no one even when wondered कि ये ग्रुप एग्जिस्ट करता है, ये क्लब है कुछ. तो whenever I went to जब मैंने इंटरव्यू के फॉर्म्स ऑन किए थे लोगों के लिए कि people apply and it's like Google affiliated and everything, so people didn't know and they were like what GDSC क्या होता है. And then it was a very long journey in introducing GDSC and like making it more accessible to people and telling them कि GDSC ये opportunities provide करता है, and इस तरह के हमारे cloud सीखो, Android सीखो के वो आते हैं, and then you can learn through it. And so it was quite a good journey, and now I can say कि I have like इतना कर दिया है कि people know of GDSC and they know कि हाँ ये this is a sort of club which does events and which does a great job inside university premises, and it has a like great community outside in the world. So Now I want to ask all of you guys एक question कि जब आप लोगों ने अपने like you guys have pursued your careers very well and आप लोग काफ़ी extra curricular activities में भी participate कर चुके हैं. So now I want to ask is that those stereotypes you face जो हम लोगों को करनी पड़ती हैं as women, unfortunately हम सबको करनी पड़ती हैं. So how did you guys overcame that? अपने mindset को किस तरह से change किया? Like every one of us at some point in our life कुछ लोगों का वो point गुजर चुका होता है, कुछ लोगों का point वो बहुत late आता है, कुछ बहुत earlier उस चीज़ को face कर देते हैं just because वो जिस region में रहते हैं, जिस background से, जिस family background से वो लोग ताल्लुक रखते हैं. So I wanna ask this कि आप लोगों ने उन stereotypes को कैसे overcome किया, और आप लोग क्या स्ट्रगल, आप लोग दूसरों को, जो लोग उन स्टेरियोटाइप्स को ओवरकम करना चाहते हैं, जो फीमेल्स अपने करियर्स को परस्यू करना चाहती हैं, आप लोग उनको कैसे एडवाइस करेंगे कि आगे आएं और फील्ड्स को परस्यू करें? Hafsa, do you want to go first? Yeah, sure. Acha, I would suggest the women कि whatever they want to pursue, just be very sure that this is something they want to do.
और दूसरी बात, ये एक हर्डल फेस करना पड़ता है, वुमेन ऑल ऑफ अस फेस दैट, कि वी आर इमोशनली वेरी इजी टू कोप विद, नॉट कोप विद, हमें मतलब इमोशनली ना, वी आर वेरी इमोशनल, वी आर वुमेन, वी आर एम्पैथेटिक, वी आर वेरी काइंड, क्योंकि अब होता ये है कि पीपल ट्राई टू ओवरकम अस, ठीक है, वो हम पे ऊपर से आने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू मेक अस इमोशनल, ताकि so that we may not perform well, or like to harm us or something like that. Not it it not always happens, but it happens. So uh, what we can do is we can be emotionally strong and stable. हमें ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि yes we can, और हम जो करना चाह रहे हैं वो हम कर सकते हैं. Whatever it is we want to do, we can. और इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि अगर आपको डाउट हो रहा है कि आप नहीं कर सकते, या मतलब आप कर नहीं पाओगे, घर से नहीं निकल सकते, या जो भी है, द फर्स्ट थिंग इज कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन. और दूसरी बात ये है, यू कैन ऑलवेज टॉक टू अनदर वुमेन इफ़ यू आर कंफर्टेबल, जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में है. यू कैन टॉक अबाउट इट, यू कैन आस्क क्वेश्चंस. तो यू कैन ऑलवेज आस्क, यू शुड आस्क कि आप जो फील्ड, यू शुड डू research कि what you want to do, either it is something of your interest or it is just an attraction, कि ये आपको सिर्फ attract कर रहा है, या this is something you want your career to pursue in. If I would give an example, तो जब मैंने FIP choose करना था, तो I did my FIP in machine learning, तो I developed an app. तो my degree was bioinformatics, which is that के you use information technology, computer science in the field of biology. ठीक है, कुछ भी आप करते हो using computer science, AI, IT in the field of biology for the benefit of mankind. तो initially कोई interest नहीं था AI में, but जब हमने अपना FIP select किया, तो उसमें we built it an app जो कि soil identification system. तो जब वो करना शुरू किया, तब पता चला कि अच्छा, मशीन लर्निंग भी कोई चीज़ होती है, AI भी कोई चीज़ होती है. देन आफ्टर गेटिंग डन विद माई FIP, मेरा इंटरेस्ट उसमें इतना ज़्यादा बिल्डअप हो गया था कि आई डिड मोर रिसर्च ऑन इट. आई टुक 6 months. मैंने उस वक्त डिसाइड किया कि मुझे AI में आना चाहिए, आगे MS करना है मुझे, बिकॉज आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. 6 months मैंने उस पर रिसर्च किया, मैंने जो उसके कोर्सेज थे वो ढूंढे, बेसिक कोर्सेज वो किए, ताकि जो भी रिक्विजिट्स हो वो मेरे पास हो, बिकॉज आई वॉज श्योर कि आई वॉन्टेड टू डू दैट. आई एक्सप्लोर इट फर्दर. अगर मुझे कोई चीज़ उसमें ऐसी मिलती जो मुझे लगती है कि बहुत मुश्किल है, या मैं कर नहीं पाऊंगी, या इंटरेस्टिंग नहीं लगी, तो मे बी मैं कोई स्विच करती या किसी और फील्ड को यूज़ करती. बट आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन दैट. डू योर रिसर्च, do not be afraid to ask questions, and be bold. That's all. अच्छा, सो आई वुड लाइक टू टेक ओवर फ्रॉम हियर. दो तीन बातें हैं जो सब लोग आई वुड रिकमेंड के सब सुनने गौर से, बिकॉज देखिए गाइस, कॉन्फिडेंस इज द की and women supporting women is a thing, because when you step out in a male dominant society, you should be confident enough to cater all types of hurdles or barriers. You should be confident enough to speak for yourself, to stand up for yourself. Because I remember when I was a kid, बहुत बड़े होने की बात नहीं करते, आई वॉज अ किड एंड आई फेस्ड हरासमेंट एंड बुलिंग एट अ वेरी वेरी अर्ली एज. एट दैट टाइम आई थॉट कि ऐसा क्या है बाकी बच्चों में जो मेरे में नहीं है, एंड दे आर नॉट गोइंग थ्रू दिस थिंग एंड आई एम गोइंग थ्रू दिस थिंग. तो आई स्टिल रिमेंबर, आई हैव नेवर टॉक्ड अबाउट इट ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम ओपनली टॉकिंग अबाउट इट. एज अ किड मैंने ये चीज़ नोटिस की, मैंने उस पर गौर किया, और मैंने देखा कि दी अदर किड्स are confident enough to stand up, to take stand for themselves, to speak for themselves. तो वहाँ से मैंने में एक चेंज आया. मैंने वहाँ से ना एक थोड़ा सा वो एक बोल्ड ईमान आ गई. पहले बहुत ज़्यादा एक जो डर सहमे बच्चे नहीं होते थे, आई वॉज दैट टाइप ऑफ किड. बहुत बचपन की बात है, प्रेप क्लास 1 क्लास की बात है. बट आई स्टिल रिमेंबर द अमाउंट ऑफ बुलिंग आई फेस्ड, द अमाउंट ऑफ हरेसमेंट आई फेस्ड. बट उसके बाद मेरे में ये था कि वो एक चेंज आया. I became confident. Then I was the captain of. We had houses in school time, and I was the captain till matric. उसके बाद में FSC में आई, फिर वही सीन था. उसके बाद यूनिवर्सिटी आए, फिर ये लीड वाला सीन शुरू हो गया. तो ये था, कॉन्फिडेंस इज द की.
अगर मैं कॉन्फिडेंट ना होती तो फिर नहीं यहाँ ना आती। एंड सेकेंडली मैंने एक और चीज़ फेस की थी जब मैं यूनिवर्सिटी में आई, सिंस आई डोंट बिलोंग फ्रॉम पिंडी, आई एम फ्रॉम मरी, और वहाँ पे एक ही रोड होती थी और हम उसी से स्कूल जाते थे और वापस घर आते थे, कोई इधर उधर का सीन नहीं होता था। तो यहाँ पे मैं आई थी, यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा लोग देखे, देयर वर मैनी रोड्स, मैनी प्लेसेस, मुझे समझ नहीं आती थी यूनिवर्सिटी से बाहर कहाँ कैसे जाऊँ। जब वीकेंड्स पे मुझे घर जाना होता था, आई यूज टू कॉल माई डैड कि प्लीज़ कम एंड पिक मी अप, या माई ब्रदर यूज टू कम एंड ड्रॉप, ही यूज टू गिव मी पिक एंड ड्रॉप। वो मरी से आता था स्पेशली मुझे छोड़ने के लिए मेरी यूनिवर्सिटी। तो उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये क्या स्टूपिड हरकत है, वाई एम आई गिविंग सच अ हार्ड टाइम टू माई पेरेंट्स, टू माई फैमिली, आई शुड बी इंडिपेंडेंट इनफ टू ट्रैवल अलोन। अब ये सीन है कि मैंने उस चीज़ से इतना ग्रो किया है कि अब मेरा लास्ट सेमेस्टर है एंड आई कैन गो एनीवेयर अलोन, मुझे अब ये डर नहीं होता। अभी जो रिसेंटली इवेंट हुआ था WTM का, वुमेन टेक मेकर्स का, उसमें उनका थीम था डेयर टू बी। तो दे आस्क्ड मी व्हाट डू यू डेयर टू बी, तो आई सेड इंडिपेंडेंट। तो उस टाइम सबने मुझे कहा आप तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट हो, फिर ये क्यों चूज़ किया? तो इंडिपेंडेंट, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई इट कि इंडिपेंडेंट इन अ सेंस that I want to take stand for myself. I want to travel alone. I want to take initiatives. I want to build my own startup. I don't need men. I I need men, but I need this support. ये नहीं है कि बस एक बंदा मेरे साथ लाजमी हो, मैंने कहीं आना जाना, तो वो वाला सीन नहीं हो। I should be independent enough to take stand for myself, to do everything for myself. And secondly, I would suggest that women should support each other. My HOD is a woman, and she is very, very supportive. मैंने किसी को इतना नहीं देखा। वो इतनी अच्छी हैं कि when I told her about GDSC, when I told her about the problems I was facing in university and outside the university, and how hard it was to, push women in the university to come forward and to take part in other activities, she understood that, and she was like that I'm um, with you and I'll work with you to, work for their betterment. इतना उनने मुझे सपोर्ट किया कि आज हमारी यूनिवर्सिटी में एक इम्पैक्ट है। वी कैन से दैट फातिमा जिन्ना का नाम है कहीं पे भी। पहले आई ऑनेस्टली डिडंट नो कि फातिमा जिन्ना भी कोई यूनिवर्सिटी है, बट सिंस जब से हम लोग आए, जब से हमने काम करने शुरू किया, हर जगह जाओ तो दे नो कि फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी इज़ अ यूनिवर्सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, जहाँ पे बच्चियाँ काम कर रही हैं। सो दैट्स हाउ वी वर्क। सो जैसे हफ्जा ने कहा है कि इफ़ यू आर फेसिंग समथिंग, टॉक अबाउट इट, take help from the women in your field, और if you are comfortable you can take help from your family as well. सबसे ज़्यादा अगर आपने किसी पर ट्रस्ट करना है तो आपकी फैमिली है, उसके बाद आपके जो सर्कल में लोग आते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, देन आपके जो प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में लोग होते हैं, आई एम श्योर कोई ना कोई होता है जिसको आप जाके शेयर कर सकते हो। सो मेक श्योर टू मेक फ्रेंड्स, नेटवर्किंग करें, एंड बी ओपन एंड वोकल अबाउट योर इश्यूज एंड योर प्रॉब्लम्स। कभी भी कुछ भी फेस करके आपने ये नहीं कहना कि यार मैंने चुप रहना है। स्पीक फॉर योर सेल्फ, टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। दैट इज द की टेक अवे ऑफ माई लाइफ, कि कभी भी चुप नहीं रहना। सो आई वुड सजेस्ट ऑल द women audience to be independent enough, to be confident enough to lead and break all the stereotypes and the barriers. Well, मैं आपकी like I honestly want to thank you so much कि आपने harassment पे और bullying पे अपने experience की बात की, cause girls don't do that, and you can't imagine how grateful I am कि आपने इस platform पे आकर like live आके आपने इस पे बात की. I'm really grateful for you and I really appreciate your courage, and I just wish कि females इस बारे में बात करें, because this is something that exists and they aren't encouraged to share their experiences, and this is what taking them down, और platforms पे सबसे बड़ा मसला यही होता है, that सबसे बड़ी hurdle और obstacle यही होती है that stops them from growing and pursuing their dreams. I'm really grateful for you. Over to हाजिका, sorry मुझे आपका नाम थोड़ा मुश्किल लगता है. हाजिका, That's आप अपना experience. जी, तो बेसिकली आई वुड सेकंड हफ्सा एंड ईमान। ईमान की जो बात है कि गर्ल्स शुड बी आउटस्पोकन, इफ एनीथिंग इज बॉदरिंग देम दे शुड लाइक हैव द करेज टू स्पीक, इवन इफ यू डोंट हैव द करेज, ट्राई टॉकिंग टू समवन हु हैज़, एंड ट्राई टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम समवन हु इज़ लाइक यू थिंक कैन हेल्प यू, एंड डू इट। लाइक ये बहुत एसेंशियल चीज़ है, अपने अंदर नहीं रखनी चाहिए अगर कोई बात जो है आपको परेशान कर रही है, कुछ भी है।
Secondly, traveling alone, yes, that adds to the confidence. I was in my eighth class when I started like traveling. I had a car, मैंने तभी driving सीख ली थी, and then तब से like अब तक I like खुद ही travel करती हूँ, and it's कभी भी आई डोंट रिमेम्बर कि मेरे भाई मुझे पिक एंड ड्रॉप दे रहे हो या कुछ भी हो. दैट्स बिकॉज मेरे बाबा ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी. एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज मैं बस से जाती थी कॉलेज और वो खुद ही जाती थी. बट आई टुक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ कि नहीं, आई वॉन्ट टू ट्रैवल अलोन एंड आई कैन डू इट. And yes, I think that adds to the confidence कि when you travel alone you know that no one is with you, and when you मतलब when you are going through a trouble you have to speak for yourself. There's no one for you and you have to, तो फिर then you will. So that's one thing. Other than that, Hafsa added कि she had FIP topic, and then she took courses and prereqs to be able to like pursue that thing. So yes, girls should like outgrow their knowledge and always try to like learn new things and new course through new courses and everything. Because when you know when you have a knowledge and when you know what you are doing, that also adds to the confident and helps you in what you are doing and what you want to pursue, and it like maps a clear path to you कि अब क्या करना है और किस तरह करना है. And if you don't know what you have to do, again try to see a mentor or look at what excites you and what you want to do and who is doing that thing. Try to gain help from them and talk to them and talk about the experience and etc. And other than that, I will only say कि yes, girls should help other girls, and this society is now like evolving where girls are coming from background to forward and coming to the limelight. And I think everyone should even the boys should and everyone should maintain an environment where girls feel safe and feel secure to speak about themselves and speak about their fears, speak about whatever they are feeling. And I think the process of learning should never stop, and everyone, even the boys and the girls, should try to learn anything, everything. जो भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीखना चाहते हैं उनको सीखते रहना चाहिए, और कुछ ना कुछ अपने आप को ही आउटग्रो करते रहना चाहिए. यानी आपका हर मिनट अगले मिनट आप पिछले मिनट से थोड़े ज़्यादा काबिल होने चाहिए. तो आई थिंक दैट्स इट. आई वोंट ऐड एनीथिंग एल्स. अच्छा, I would agree with you because what I believe is कि जब आपके family members, especially the male members of your family, are at your back, so it's just like a cherry on top. मतलब आपके पास potential है, and then you got your male members of the family on your back, they're supporting you, so it's just boost your courage and confidence to whole new level. Now, Hasika, I would like to ask, earlier on I asked Iman and Hafsa that if they were given chance to relive their bachelor years of their life, like as Iman is in her final year and Hafsa is pursuing her master degrees, so from bachelor's to her masters, or from the very first semester of your graduation or bachelor's, uh, what changes, अगर आपको दोबारा उन्हें relive करने का मौका मिले, तो what changes would you make in your journey? Okay, so the changes I would make, okay, I had the confidence from the start, but I was not that outspoken when it comes to like community meetups and everything, and I used to like run from them. I would like it was COVID times when my university basically started, and first second semester people used to hang out. My friends were like Hazika रुको, and I was like नहीं मैं घर जा रही हूँ, because I used to drive खुद ही. तो I was like मैं classes के लिए आती थी, class जैसे ही खत्म होती थी I used to go home. But then after like COVID ended and I sat in the community and had chit chats with people, और जब लोगों को समझा और इस तरह के volunteering में participate किया and event organize करवाया, and then I found out कि these are my things, and I मतलब वो होता है ना कुछ करके feel होता है कि यार ये इसी के लिए मैं बनी थी और ये चीज़ मुझे करनी चाहिए. So वो चीज़ I think कि अगर मैं बहुत काफ़ी पहले कर लेती तो बहुत अच्छा होता और बहुत ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि दैट थिंग लाइक गिव मी सूट्स मी, कुछ अंदर से सुकून मिलता है. तो आई थिंक मैं बहुत लेट आई कम्युनिटी वर्क्स में और ये इवेंट्स और इस सब में. तो इफ़ आई हैड अ ऑप्शन टू लाइक रीलिव दोज ईयर्स, तो आई वुड
still be on campus, stay on campus, not go home, not run from chit chats and interactions. That's the thing. Well, thank you so much. Now I would like to ask कि अगर आप तीनों की कोई भी advice हो for the women who are trying to pursue these careers कि just have the courage to do something, to pursue your dreams and come to the technical fields in order to gain success and just उन stereotypes को पीछे छोड़ देना चाहिए और अपना mindset change करना चाहिए. What would you guys like to advise those women? Okay, may I go? Yeah, you sure. Yeah, sure. Okay, so I would advise to the only advice that I would give to the girls is that if in the end of the day what matters is what you think about yourself. So have a clear and good opinion about yourself, and if it's not the case, you don't have a good opinion about yourself, you think you are not enough, then try to be enough. Like itna seek lo, itni knowledge le lo, because the fields of STEM, they are like everything is on Google and you can learn anything from मतलब websites और हर चीज़ बनी हुई है यूट्यूब पे, पूरी playlist हैं, series हैं. तो whatever you want to learn, just take out time and learn that thing and be consistent about that thing. Because in the end of the day what you end up doing is कि आप खुद को blame करते हो कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाई. तो इसीलिए अपना टाइम शुरू से ही इस तरह मैनेज करें कि जो चीज़ें आपको करनी है वो आप कर लें, एंड उनके लिए आप वाकई टाइम निकालें, एंड लेट देम बी योर प्रायोरिटी. बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज कि आप किस तरह, मतलब आपने कितनी नॉलेज ले लिया, आप क्या कर सकते हो. वेन एवर यू सिट विद पीपल, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज आपके अंदर क्या है, और आपके अंदर अच्छा होना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी. दैट, और secondly, if anything is bothering you, I know दुनिया में बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, but there are a lot of supporting people इन द सोसाइटी, और नॉन सपोर्टिंग लोग भी हैं. बट क्या फ़र्क पड़ता है, जब आप खुद के सपोर्ट के लिए खड़े हो तो आपको किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. और अगर कोई ऐसा कोई सोचता भी है, कोई लेट डाउन करने की करता भी है, तो लेट देम बी. वो हैं जो वो हैं, आप वो हो जो आप हो. आप खुद को डिपिक्ट करोगे, वो खुद को डिपिक्ट करेंगे. तो आई थिंक you should be your greatest motivation and your greatest person, और अपना कुछ बने, और अपने आप का ओपिनियन बहुत क्लियर रखें, और अपनी प्रायोरिटीज़ और टाइम मैनेजमेंट और एवरीथिंग शुड बी वेल डिफाइंड. दैट थिंग आई वांट टू. एंड आई वुड से कि बस बिलीव इन योर सेल्फ. जब आप खुद पे यकीन रखते हो तो रास्ता खुद ब खुद बन जाते हैं. यू शुड बी योर बिगेस्ट सपोर्ट एंड यू शुड बी योर बिगेस्ट पर्सन हु बिलीव्स इन यू. कहीं ना कहीं हर पॉइंट पे कोई सब लोग आपको छोड़ जाते हैं. कोई ना कोई ऐसा पॉइंट ज़रूर आता है जब आपके फ्रेंड्स आप पे बिलीव नहीं करते, कभी आपकी फैमिली नहीं करती, कभी आपके सर्कल के लोग नहीं करते. बट आई वुड सजेस्ट कि कोई नहीं भी है, बट यू शुड बी देयर फॉर यू हमेशा. सो सबसे पहले तो रेज अवेयरनेस एज मच एज पॉसिबल. जो जिस तरह अभी ये विमेन इन टेक का सेशन है, सो इट्स पर्पज इज टू रेज अवेयरनेस अमंग विमेन टू नो अबाउट द स्टीरियोटाइप्स and how they can break those barriers and stereotypes to come forward and take the lead roles. इसी तरह आप लोग भी अवेयरनेस क्रिएट करो, रिसर्च करो, देन इंस्पायर अदर्स. इफ यू हैव लर्न समथिंग, मेक श्योर दैट योर फ्रेंड और योर सिस्टर इज लर्निंग द सेम थिंग. और इतना हो कि वो सेम चीज़ नहीं भी करी तो आप उसको इतना हेल्प कर दो कि उसके माइंड में हो कि यार नहीं, मैं भी ये कर सकती हूँ, या दुनिया में और भी डिफरेंट फील्ड्स हैं. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर सेज दैट शी वॉन्ट्स टू परसू जर्नलिज्म. And I often tell her कि journalism पाकिस्तान में it's not suitable for women. But ये एक stereotype ही है again, because if she wants to, she can. तो आप खुद पे बस बिलीव, खुद पे यकीन रखो, और जितना हो सकता है उतनी स्ट्रगल करो, उतना पढ़ो, एंड मेक श्योर टू टेक हेल्प फ्रॉम अदर्स एज मच एज पॉसिबल. अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो बी वोकल अबाउट इट, टेक हेल्प एंड टेक सपोर्ट. बिकॉज आई बिलीव कि जो हमारे सर्कल में लोग हैं, स्पेशली कम्युनिटीज़ में, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. आप ज़रूर कम्युनिटीज़ ज्वाइन करो. एंड सेकेंडली, नेटवर्किंग हेल्प्स अलॉट इन at various phases of your life. That's all I want to say. I would just add that we should start facing our fears. Like मैं सबको ये advice करूँगी कि face your fears and explore your power. Because I think we women are so powerful. We lead generations वैसे ही. Like we see our mothers feeding
everyone doing things not normal men can do at a time, मल्टीटास्किंग, एक तरफ वो खाना भी बना रही है, एक तरफ वो बच्चों को भी देख रही हैं, एक तरफ वो कपड़े भी इस्त्री कर रही हैं, तो वी आर मल्टीटास्किंग एंड वी कैन डू दैट. अगर वही सारी चीज़ें एक मैन पे डाल दी जाएं तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू डू दैट. तो जस्ट face your fear, trust the power. I think we are powerful enough to conquer the world if we want to. We have that potential. So just trust yourself enough that whatever the barrier comes in the way, you should be able to pass it with confidence without regretting. So just be very sure what you want to do. Again, फेस योर फेयर्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम अगर नहीं करते ना, अपने कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, अपने फेयर्स को फेस नहीं करते, तो वी कीप ब्लेमिंग आवर सेल्फ एंड वी कीप रिग्रेटिंग, अच्छा अगर उस टाइम पे मैं ये कर लेती तो शायद ये हो जाता. तो अवॉइड दैट एंड फेस योर फेयर्स, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. आपको डर लगता है ट्रैवल करने से अकेले, तो ट्राई इट वंस. अगर कुछ खुदा न खास्ता कोई बुरा इंसिडेंट होता है तो just look at the positive side of it. So stay positive, face your fears. That's all I would say. Well, thank you so much. Thank you all of you guys for giving us your precious time. I just wish you very very best of luck to for your future to all of you. And for those who are watching, I just really wish कि हमारी जो भी discussion थी, it was quite fun and I learned a lot. I hope you guys learned a lot. And I just really wish that especially the females कि उन्हें इतना confidence और इतना courage मिल जाए that they start believing yes you can do it. And I really hope कि आप लोग अपने future में अपने fields को pursue करें और अपनी dreams को pursue करें. And thank you again all of you guys. Now over to Azkapi. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, you are. Okay, I just wanted to say thank you to Eman, Hafsa, and Hazika. आप लोग ने time निकाला, आप लोगों ने आके join किया, and I feel like that concept of yes I can, जो के like when I thought of the name of the episode, it was के like these are women around me who are doing everything even better than men in my opinion, right? So yes they can, and I hope that the audience understood कि किसी चीज़ से डरना, because the only thing that's stopping you from greatness is yourself basically. If you have the confidence and if you have that community, if you have that network, and today's session's purpose was to show you that around you you do have that community of women who are willing to work and who are willing to come forward and who are willing to support other women so that they can do great things. So I hope that the session was insightful. Once again, a thank you to our speakers and a thank you to Amna for leading the session so wonderfully. And I hope everyone enjoyed the session and had fun. The LinkedIn's for all three of our speakers are in the comment section, so you can access from that as well. हम अपने socials पे भी एक दफा फिर से post कर देंगे. And yes, just a thank you to everyone for joining today. I hope you enjoyed the session. Thank you so much, Thank you. Aska, for having us. Thank you, Aska. I was about to say the same thing. Thank you so much. It's my pleasure. It's my pleasure. Okay, Deepa. Allah Hafiz, everyone. Okay, Allah Thank you Hafiz. guys. I Allah love Hafiz. it. Allah Hafiz.